Good evening, children. Welcome to my dream. Today we will start that session which has been discussed in the previous session, that is the projectile motion. Now, if the two objects are thrown, if the two objects are thrown making an angle theta with a certain velocity u, another one is projected with the same velocity, makes an angle 90 minus theta. Got it? When the two objects are thrown with a certain angle with the horizontal, it makes an angle theta and 90 minus theta. Then calculate the ratio. Of their first time of flight, second height attained, and third one is the range, ratio of their ranges. If this problem is asked in another way, that is, an object is thrown at an angle theta with the horizontal, another one is projected with the same velocity, with a certain velocity, okay, makes an angle theta. These two are same because with the horizontal it makes an angle 90 minus theta. Got it? So first of all we are talking about the time of flight. If the two objects are thrown with the same velocity, makes an angle theta and 90 minus theta with the horizontal. Then calculate the ratio of their time of flight, height attained, and their ranges. Now we are talking about the time of flight. Yes, first one is T1. Twice of u sine theta. This is the formula of the time of flight. Here the angle of projection is theta. Another one is twice of u sine 90 minus theta. Sine 90 minus theta gives cos theta. Then you can find the ratio of their time of flights, that is equals to tan theta. So T1 ratio T2 gives tan theta by 1:1.
tan theta is to 1. If this problem is given like this, one of them is 30 degree, another one is of 60 degree. So whatever the angle is previously given to you, जो पहले prefix है कौन सा है 30 degree, so directly you can put T1 upon T2 tan 30 by 1, then you will get 1 is to root 3. सीधी सी बात है, जो पहले आपको एंगल दिया है 30 दिया तो आपको 30 कंसीडर करना है, 60 दिया 60, वट एवर द एंगल इज गिवन टू यू, जो भी आपको एंगल दिया है पहले, ठीक है, एंड द कंडीशन इज द सम ऑफ द टू एंगल्स मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री, थीटा एंड 90, विच गिव्स 90. अनदर वन इज height attained by the projected body, which is given by u square sin square theta divided by 2g. Second one, u square sin 90 minus theta gives cos, so you can write down cos square theta upon 2g. So H1 upon S2 gives sin square theta upon cos square theta, which gives tan square theta is to 1. So H1 ratio S2 gives tan square theta is to 1. Again we are taking the same problem. If theta is equals to 30 and another one 90 minus theta, which is equal to 60, then you can take H1 upon S2, 1 is to 3, because tan 30, which is 1 upon root 3, there is the square, so it will become 1 is to 3. Now we are talking about the range. The formula of the range is u square sin 2 theta upon g. Sin 2 theta upon g. Another one is projected with the angle of 90 minus theta. So you can write on R2 u square sin twice and angle is 90 minus theta. This one is the equation first. Then you will get u square sin 180 minus twice of theta upon g. Sin 180 minus twice of sin ही रहता है बेटा, 180 प्लस हो 180 माइनस हो, so it will become u square sin of twice of theta. As you see, this one and this one, the magnitude of R1, that is u square sin of twice of theta divided by g. Similarly, you see R2 is equal to u square sin 2 theta by g. They are equal in magnitude, which shows the ratio of their ranges is equal to 1 is to 1. Got it? तो हमने क्या पता करा बेटा? If the two bodies are projected with a certain velocity makes an angle theta and 90 minus theta with the horizontal, either you can say, or if both the angles are theta, but one of them is with the horizontal, another one is with the vertical, the questions are tricky. In this case, you will see the ratio of their time of flight, that is tan is theta is to 1. Here tan square theta is to 1. But as you see from the figure,
फिगर में मैंने पहले ही बना दिया कि रेशियो ऑफ देयर रेंजेस क्या है बेटा, 1:1 है. दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग R1:R2 which is equals to 1:1. Hello, students. Welcome to the My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why the My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by the My Dream to bring a revolutionary change in recent. Yes. If the two objects are thrown, makes an angle theta, another one is 90 minus theta with a certain velocity. Then you see both of them follow the different path, attain the different height. Let it be h1 and h2. These are the two different altitudes with the different angles, rather than they are having the same velocity. Then h1 is equals to u square sine square theta divided by 2g. Yesterday I have already discussed. क्या डिस्कस किया था? हाइट का फार्मूला क्या बताया था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. h2 is equal to u square sine square 90 minus theta twice of g. हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? वी वांट टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन height h1 h2 and range. Here we want to discuss the relation between h1 h2 and the range, and h2 will become u square cos square theta twice of g. So h1 into h2, h1 into h2 h1 into h2
u square sin square theta by 2g, u square sin square theta by 2g in favor of h1, whereas u square cos square theta by 2g, that is for h2. It can be written down like this also, h1 into h2, that is 2 to the 4, u square into u square sin theta cos theta divided by g, and you can make the square over it. U square into u square, it will become u square u raised to power 4 sin square theta cos square theta divided by g square, that is g square. There is some missing. क्या missing है बेटा? h1 into h2, if it is multiplied by 4 and divided by 4, divide कैसे करेंगे? Square of 2 gives 4, 4 से multiply कर दिया, 4 से divide कर दिया, sin theta cos theta by g, and this is the formula of the, ये किसका formula है बेटा? मैंने बताया था, for the comparison point of view you can use this formula, किसके लिए? रेंज के लिए, है ना, बेटा बताया ना, h1 upon h2, that is equals to r square. So r square is equals to 16 h1 into h2, so r is equal to 4 h1 into h2. So this is the relation between the heights and the range when the two objects are thrown with a certain velocity, makes an angle theta and 90 minus theta. These are the complementary. Theta and 90 minus theta क्या है बेटा? Some of these angles must be complementary, then the ratio of their ranges must be equal to 1. But here it is, we have discussed the relation between heights and the range. So this is a now. Yes. Now we are talking about the kinetic energy. Kinetic energy possessed by a projected body at the highest point. Here we are discussing the kinetic energy. An object is thrown like this, and you want to discuss the kinetic energy at the highest point. If the different angle of projections are given to you, how you can find out the kinetic energy at the highest point. So this is the initial velocity. Obviously that object has some mass. Without mass तो possible ही नहीं है बेटा. So initial kinetic energy, initial kinetic energy is represented by K or E, that is equal to half mu square. This is the initial kinetic energy. But at the highest point, as you know,
In the previous session, we have already discussed at the highest point, there is only the velocity which exists on the horizontal component, not on the vertical component. So, on the horizontal component, that is ux, which is equal to u cos theta. On the vertical component, either in the vertical direction or in the downward direction, the velocity is 0. Now you want to discuss the kinetic energy at the highest point. Kinetic energy at the highest point is given by half. There is no change in the mass. The weight will become changed due to the change in gravity, but the mass do not vary. The weight can vary because of the change in gravity. So the mass remains same and the velocity is ux. And you see half m ux, that is u cos theta, and there is a square, so you can write down u square cos square theta. In place of this half mu square, you can write down k or e. या तो आप k लिखिए या e लिखिए. So kinetic energy at the highest point is given by k cos square theta. Got it? Now see that this chart. Serial number 1, if theta is equals to if theta is equals to थीटा कितना दिया बेटा 0 डिग्री. थीटा बेटे कितना दिया आपको 30 डिग्री. थीटा इज ऑफ 45. थीटा कैन बी ऑफ 60. थीटा कैन बी ऑफ 90. So serial 1, serial 2, 3, 4 and 5. And you want to discuss the kinetic energy at the highest point. These are the different angular projections are given to you. Say theta is equals to 0, theta is equal to 30, 45, 60 and 90. Whatever the angular projection is given to you, then you can find out the kinetic energy at the highest point, which is given in terms of k cos square theta. So that is k cos 0. And cos 0 is equals to 1. So kinetic energy at the highest point, it will become k. It will become k. It means there is no loss. There is a conservation of kinetic energy. It means 100% of k. And what about the potential energy? The magnitude of the potential energy is equals to 0, because the 100%, there is a 100% kinetic energy at the highest point. Why? Because that object is moving along a straight line. So there is no potential energy. समझ में आया? हाँ भाई, आ रहा है समझ में? If the angular projection is given to you, that is k cos square 30, the angular projection is 30 degree. Then kinetic energy at the highest point, k cos 30 under root 3 by 2. There is a square, so it will become 3k by 4.
Root 3 by 2, there is a square, so root 3 will become 3, 2 is 4. It will become 75% of K. It means there is a loss of 25% of energy, which converts into the potential energy. आपने 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया तो उसने कुछ ना कुछ सर्टेन हाइट ली, तो सर्टेन हाइट ली तो वो कितनी होगी, अबाउट नहीं 25%, because the 75% of initial kinetic energy at the angle of projection you will get at the highest. So kinetic energy at the 45 degree kinetic energy at the angle of 45 degree so kinetic energy at 45 degree cos 45 1 upon root 2, so it will become K by 2, which means 50% of initial, 50% of initial. If it is of 60 degree, then you can write down cos square 60 degree, so it will become cos 60 1 by 2, so it will become 1/4. You can say 25% of K. When an object is thrown vertically upward, it means the angle of projection is 90 degree. So K cos square 90 cos 90 will become 0. So it will become 0% of K. Means if an object is thrown vertically upward, it takes an angle 90 degree, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 100% हो जाएगी. क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 100%. मैकेनिकल एनर्जी is the sum of kinetic plus potential. Suppose total mechanical energy is E, that is E cos square theta. We are talking about the highest point. Then potential energy at the highest point is given by E minus E cos square theta, which is E 1 minus cos square theta. Then you will get E sin square theta. अब आप सोच रहे हो आपने यहाँ E लिख दिया, यहाँ पर K लिख दिया, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100% कितनी है, K. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का अमाउंट कितना हो गया, K. ईदर यू कैन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय K और E. इट कैन बी राइट डाउन इन दिस फॉर्म ऑल्सो, K sin स्क्वायर थीटा. इफ यू वांट टू चेक कि जो भी मैंने बताया, सपोज मैं बात कर रहा हूँ 30 डिग्री की, इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री एंड यू वांट टू डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी, हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है हाईएस्ट पॉइंट. sin 30 विल बिकम हाफ
it will become 1/4 और ये कितना 3k/4, 1/4 means 25%. If an object is thrown at an angle of 25 degree and you want to discuss the potential energy at the highest point, it will become 1/4. यहाँ से भी पता लग जाता है k minus 3k/4 which is k/2. Next, if an object takes time t1 to reach the point P. If an object takes time t1 to reach the point P and from which it takes the time t2 to reach the ground, by a projected object. Then देखते हैं क्या करना है हमें. Suppose this is the point P. It takes the time t1. Say it takes the time t2. ठीक है. And you want to know y, vertical displacement. So the t1 is the time to reach the point P. So it is given by t1. So it is given by t1. t1 is equals to twice of u sin theta by g. और t2 कितना है? t2 कितना? t2 twice of u. बताओ. बताइए क्या हुआ? नहीं पता चला? आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि आपको यहाँ का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पता. तो क्या करें? तो बेटे हम क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि टोटल टाइम कितना है. टोटल टाइम कितना है बेटा? टोटल टाइम इज t1 प्लस t2. t1 प्लस t2 क्या दे रहा है आपको? t1 प्लस t2 which is equal to t. That is the total time of flight. So t1 plus t2, that is 2u sin theta by g. Got it? And u sin theta, that is g into t1 plus t2.
divided by 2. Yes. नोट कर रहे हैं आप? And you want to discuss the vertical displacement over here. So y is equals to u sin theta into t1, यहाँ से यहाँ तक का तो t1 टाइम है ना बेटा, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. So in place of this u sin theta क्या करना है? वैल्यू रख दीजिए g by 2 t1 plus t2 into t1 minus half gt square. There is the t1 square. G by 2 common. T1 into t1, t1 square. This is t1 into t2. This is t1 square. Then you will get y is equals to g by 2 t1 into t2. In some books it is given by h is equal to g by 2 t1 into t2. Or you can say t1 into t2, that is 2h by g. इसी टाइप का एक फार्मूला और पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले. Yesterday in the previous session we have already discussed the product of their time of flight. 2 by g into r. ठीक है? Now we are talking about the another. Yes. Now we are talking about the momentum. The momentum possessed by an object. एक तो होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है? तो ये जो टेंजेंशियल मोमेंटम है उसको देखते हैं. The momentum possessed by a projected body. Momentum possessed by a projected body. Momentum possessed by a projected body. क्या है? From initial to the highest point. The momentum possessed by a projected body from initial to the highest point on the vertical component. Remember one thing, किस पर डिस्कस कर रहे हैं हम? किस पर कर रहे हैं बेटे? वर्टिकल कंपोनेंट पर डिस्कस कर रहे हैं. So this is an object which is thrown like this, makes an angle theta. This is ui, at the highest point vy 0. As you know, at the highest point the velocity on the vertical component
either in upward or in the downward direction is 0 at that instant. And uy, that is u sin theta. So, momentum possessed by a projectile body from initial to the highest point, that is MUY minus MVY. That is a change. That is a change in momentum. Change in momentum भी आप बोल सकते हो, change in momentum. So the change in momentum from initial to the highest point is given by mu sin theta. And this is 0. Because at the highest point, mu sin theta. बट आपसे कोई नहीं पूछेगा इस टाइप का, कुछ और ही कहेगा. You want to discuss the change in momentum from initial to the highest point. इतना इजी तो कोई पूछेगा नहीं यार. तो क्या करेगा वो? G से मल्टीप्लाई करेगा, G से. So here it is weight of that object, and you know this one. This is the half of time of flight. Half of time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला बताया था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बताया था 2u sin थीटा बाई जी. सो u sin थीटा बाई जी क्या दे रहा है बेटा? हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम इनिशियल टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल. ठीक है. आपको एक बार बताया था टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है. एज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, द ग्रेविटी अभी वेरी नहीं कर रही है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं. इफ यू वांट टू डिस्कस द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, from initial to the final position, then it will become weight into, अब तो total time of flight लगेगा बेटा, total time of flight. This is the change in momentum from initial to the final position in terms of the weight and the total time of flight. That can be write down weight into time of flight. Next. Now we want to discuss the change in momentum, change in momentum, change in momentum. From initial to the final position. The change in momentum from initial to the final position on the horizontal component. हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. Before we will discuss it,
हमें कुछ कांस्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें कांस्टेंट होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी कांस्टेंट। सेकेंड, velocity on the horizontal component, velocity on the horizontal component, velocity on the horizontal component remains constant momentum on the horizontal component remains momentum on the horizontal component remains constant. Why? Momentum is defined as it is a product of the mass and its velocity. Velocity तो already constant है, horizontal come to mass into velocity, तो momentum भी constant. Kinetic energy on the horizontal component remains constant. These are some physical quantity when we are talking about the projectile motion. जब हम projectile motion की बातें करते हैं, near the surface of earth की बात कर रहे हैं, when an object is thrown obliquely near the surface of earth, gravity do not vary. Velocity on the horizontal component remain constant. चलो इसको बता देते हैं. ux u cos theta. Suppose that object reaches over here, makes an angle alpha. Velocity will become v cos alpha. At the highest point, that is ux u cos theta. Suppose it reaches at this point, makes an angle gamma, so it will become v dash cos gamma. This is the velocity before striking the ground, makes an angle beta, that is capital V, बड़ा V बना लीजिए, v cos theta. It means u cos theta, which is equal to छोटा v cos alpha, which is equal to v dash cos gamma, that is equal to vx, final velocity on the horizontal component. This is the initial velocity on the horizontal component. That is given by v cos beta. बड़ा v बना लीजिए. So the velocity on the horizontal component remain constant. That's why, as you know, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, if an object is thrown horizontally, there is no loss in the kinetic energy, there is no loss in the mechanical energy. The potential energy will become zero. So the velocity on the horizontal component remain constant. अभी मैं यहाँ पर लिख दूंगा m, तो ये मोमेंटम हो जाएगा. तो मोमेंटम सबके मास तो सेम है, मास भी वेरी करता है बेटा. काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ m u x स्क्वायर, वो भी हो जाएगा. So these are some physical quantity
in the projectile motion that remains constant. Now, the change in momentum from initial to the final position. हाँ जी, समझ गए? अच्छा, 0, हाँ, yes. Change in momentum, this is Vx बड़ा वाला. Change in momentum from initial to final position on the horizontal component, that is Pix minus Pfx. Initial position on the x-axis, final position on that. That is the momentum. That is mu cos theta. That is mv cos beta. And v cos beta is equal to u cos theta. So you can write down in place of v cos beta, you can write down u cos theta. So change in momentum from initial to the final position, the initial to the final position on the horizontal component क्या होगा? 0 बताया बच्चे ने. The next one is now we are talking about the, आपने देखा होगा कुछ बच्चे बॉल फेंकते हैं, when the students or the players, जो भी है, क्रिकेट खेलते तो बॉल कैसे जाती? घूमती हुई जाती है ना, ऐसे जाती, सीधे सीधे नहीं जाती बेटा. तो क्या करें? इसका मतलब उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी है. And what do you mean by the angular momentum? Movement of the momentum about an axis of rotation. Movement of the momentum about an axis of rotation, that is called angular momentum. It means उसका कुछ radius of curvature भी. क्या है? उसका कुछ radius of curvature भी डिस्कस कर रहे हैं. Yes. और क्या क्या चीज डिस्कस कर सकते हैं? When we are talking about the projectile motion, क्या और हम डिस्कस कर सकते हैं इन चीजों के अलावा? हम डिस्कस कर सकते हैं from the certain height you can throw an object horizontally. An object is thrown horizontally like this. Because of the gravity आएगा तो नीचे. It means थीटा यहाँ पर कितना है? 0. From the certain height you can throw an object like this also. आपने certain angle बनाया, यहाँ से फेंक. In that case gravity कैसी, हाइट कैसी लेंगे? सॉरी बेटा, हाइट कैसी लेंगे? नेगेटिव. ये आपका प्रोजेक्शन है, यहाँ से आप फेंक रहे हैं तो ये क्या हो गया? नेगेटिव एक्सिस. ये इसका पॉइंट है, बॉडी इधर ही आ रही है. एंड वन ऑफ देम इज ऑब्जेक्ट जो आप फेंक रहे हैं वो सर्टेन डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, सर्टेन एंगल. इट मीन्स वी आर हैविंग द 3 मेथड. ठीक है. यहां पर क्या बोलोगे? यू एक्स यू कॉस थीटा. और यहाँ क्या बोलोगे? यू वाई यू साइन थीटा. यहाँ पर अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं, यहाँ टुवर्ड्स द ग्रेविटी फेंक रहे हैं. यहाँ पर अपने आप आ रही है बॉडी टुवर्ड्स द ग्रेविटी. इन दिस केस क्या लेंगे? एच पॉजिटिव लेंगे. यहाँ पर भी बेटा पॉजिटिव लेंगे. तो हमने बताया हम एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम पजेस्ड बाय द प्रोजेक्टेड बॉडी. कैसे कैसे?
हाईएस्ट पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर करें, इस पर करें, इनिशियल पोजीशन पर करें, फाइनल पोजीशन पर. These are the different angular momentum at the different points on that periphery. ठीक है. Suppose a muzzle is given to you, a muzzle आपको दी है और वो फायर कर रही है, तो वो सर्टेन एंगल पर एक फिक्स कर दिया आपने एंगल और वो ऐसे जा रही है बेटा, इस तरह. ठीक है. तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय दैट बुलेट्स, जो उसमें से बुलेट दिख रही है वो कितना पर्टिकुलर एरिया कवर कर रही हैं, वो भी हम देख सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट द सर्कमफ्रांस, वो कितना सर्कमफ्रांस ले रही हैं. भाई मैक्सिमम रेंज तो यही है और यही रेंज यहां पर है, यही रेंज यहां पर है, यही रेंज यहां पर है और यही रेंज यहां पर है. तो ये इसका जो सर्कमफ्रांस है, ठीक है, उसको भी रिफ्लेक्ट करना. ठीक है. और क्या बताएं हम आपको, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हम डिस्कस करते हैं. चलिए इसको करते हैं. Now we are talking about when an object is thrown. When an object is thrown horizontally from a certain height, हम सर्टेन हाइट से इस ऑब्जेक्ट को किस तरह फेंक रहे हैं. एक सर्टेन हाइट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं. तो हमने हॉरिजॉन्टली फेंका तो बेटे क्या हो गया, तो हमने हॉरिजॉन्टली फेंका तो बेटे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया बेटा आपके पास, 0. As the object is thrown horizontally, it makes an angle, कितना बताया मैंने, 0. हॉरिजॉन्टली का मतलब हो गया 0. तो ux क्या हो गया, दिस इज द हाइट. एंड uy के बारे में क्या कहें, uy हो गया u sin 0 and sin 0 0. Now remember one thing, क्या चीज पता चला. If an object is falling freely, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम फ्रीली फेंक रहे हैं तब उसमें इनिशियल वो क्या बोलते हैं, falling freely, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0. बट इन दिस केस यू सी, ये भी ऐसे कुछ बता रहा है. ये कह रहा है when an object is thrown horizontally from the certain height, the initial velocity on the vertical component, the initial velocity on the vertical component क्या है, and because of the gravity, ये बॉडी यहाँ आ गई और ये इस तरह बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इस कैपिटल V टकराने से पहले, टकराई नहीं है, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट अटेन्स ए वेलोसिटी कैपिटल V. कैपिटल V लिया हमने, छोटा V नहीं लिया बेटा. तो वो क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकता, आपसे क्या क्या पूछ सकता, वो हम डिस्कस कर, वो आपसे हाइट डिस्कस कर सकता है. हाउ मच टाइम इट रिक्वायर टू कंप्लीट द जर्नी, वो टाइम पता कर सकता है.
वो फाइनल वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्कस कर सकता है, फाइनल वेलोसिटी ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड डिस्कस कर सकता है, वो कैपिटल वी डिस्कस कर सकता है, वो रेंज डिस्कस कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें, किस पर्टिकुलर एंगल से वो टकराएगा बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वो कितना बना रहा है एंगल, वो भी पूछ सकते हैं। तो हम पहला डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द हाइट h. Height is because of this velocity u by t. बॉडी कहां जा रही है, नीचे, ग्रेविटी पॉजिटिव, and uy is equals to 0. Then capital H, small h is given by half g2 square. एक क्वेश्चन यही ले लेते हैं। स्टेटमेंट यही है, when an object is thrown horizontally from a certain height, it completes the journey in 3 minutes 3 seconds. If t is equals to 3, when an object is thrown horizontally from a certain height, it takes 3 seconds. कितना सेकंड ले रहा है, 3 सेकंड। तो हाइट कितनी होगी बेटा, हाइट इज ऑफ height is of 3 seconds. (44.1 मीटर). ठीक है, सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड ले लेते हैं। अगर टाइम इंटरवल आपको दिया है और सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, देन यू कैन फाइंड आउट द हाइट, किस पर्टिकुलर हाइट से उसने पता किया। सो h इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, सो t इज equals to t square is equals to t square is equals to 2h upon b, which will become under root 2h upon b. Again you can say, when an object is thrown horizontally from a height this, तो उसको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। If h is equals to 490 meter and you want to know t, then you can get 2 into h is of 490, ग्रेविटी आपने ले लिया 9.8, इट विल बिकम 980 डिवाइडेड बाय 9.8, देयर इज अ स्क्वायर रूट, so it will become 100 and then you will get 10 seconds. So time कितना आ गया बेटे, सपोज यू आर ऑन ए हिल, आप हिल पर हैं, आपने कोई स्टोन फेंक के मारा, घड़ी चेक की, आपने लगा कि 3 सेकंड, पता लग गया आपको हाइट कितनी है। आपको हाइट पता है, वी आर एट दिस पर्टिकुलर लेवल, हाइट दी, आपको टाइम इंटरवल पता लग जाएगा कितनी देर में वो नीचे पहुंचेगा। ठीक है, चलिए एक इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ये कोई आपके पास ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स हैं, कुछ अलग फ्लैट्स हैं,
यहां पर कोई बच्चा बैठा है, कितनी हाइट पर? 540 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 50 मीटर। दिस पर्टिकुलर बॉय थ्रोज ए स्टोन या कुछ भी whatever, उसने उसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। कैसे फेंक दिया? और वो सीधा इसी के पास चला गया। तो ux तो बेटे u है, आपने देख ही लिया ux क्या है, और uy क्या है? 0। तो नेट हाइट कितनी है? नेट हाइट आपके पास है 540 माइनस 50, अगेन यू विल गेट द 490 मीटर। तो आंसर कितना आएगा टाइम का? If a student or a person is at a height of 540 meter in group housing flat, he throws or she throws a stone like this horizontally, which is at a height 50 meter above the ground, then the net height is of 490 meter. The next is this is horizontally फेंक रहे हैं, ux क्या है? u है, uy कितना बताया आपको? 0। You must remember always when an object is thrown horizontally, जब हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे ना बेटा, तो uy हमेशा 0 ही रहेगा। तो u sin 0 0 ही। नाउ this is beta, this is velocity v, vx. Third point, vx is equal to ux, vx is equal to ux, which is equal to u. This is the final velocity on the horizontal component before striking the ground. Fourth, Vy is equal to Uy plus Gt. This is the final velocity on the vertical component. This is the initial velocity on the vertical component. And the initial velocity on the vertical component is given by 0. So Vy is equals to Gt. In place of t, ध्यान से देखिए, in place of t आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा √2h/g, और ये कितना हो गया? √2gh। अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा था मोशन इन 1D में v² + u² + 2gh। When an object is falling freely, तो क्या करते थे? ये 0 कर देते। अभी भी वही आ रहा है। Now you want to know this velocity before. Fifth one, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। This is Vx, this is Vy, this is Vy, and this is V. So Vx square plus Vy square. By using the Pythagoras theorem, we can find out the capital V. Capital V पता कर रहे हैं? So capital V is equals to Vx क्या है? Vx, that is u. Vy क्या है? दे देते स्क्वायर। देखा बच्चे, वही आ गया। Now you want to know किस एंगल से वो, किस पर्टिकुलर एंगल से वो टकराएगा। That is tan बीटा। बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है,
तो tan बीटा क्या दे रहा है बेटा, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई आप जी टी लिखें, ये लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको टाइम इंटरवल दिया है तो आप पी लीजिए, और आपको हाइट दी है तो एच लीजिए, क्या प्रॉब्लम। जी टी वी एक्स तो यू एक्स है, विच इज इक्वल टू यू। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया टेन इनवर्स जी टी बाई यू। नेक्स्ट रेंज डिस्कस कर, आपने पढ़ा था रेंज। रेंज क्या था, यू एक्स इंटू टी, सबसे पहले पढ़ाया था, प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। The horizontal displacement covered by a projected body that is called range. ux क्या है, u टाइम ऑफ फ्लाइट पता है आपको, 2h अपॉन जी। सो आप ऐसे पता कर सकते। Suppose an aeroplane is flying like this. Suppose an aeroplane flying horizontally, और आप बेटे फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, और यू वांट टू नो द डिस्प्लेसमेंट। ये कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, यहाँ फूड पैकेट आप दे रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, दिस इज एच, दिस इज आर, विच इज वेरी इजी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो क्या बताया हमने अभी आपको, हमने बताया when an object is thrown horizontally from a certain height, क्या क्या हम पता कर सकते हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर सकते हैं, हाइट पता कर सकते हैं। अगर टाइम इंटरवल आपको दिया, टाइम इंटरवल दिया है तो हाइट पता कर ही रहे, और हाइट दी है तो टाइम इंटरवल पता कर सकते हैं। वेलोसिटी पता कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर, वेलोसिटी पता कर सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट पर, फाइनल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड डिस्कस कर सकते हैं, किस एंगल से वो टकराएगा वो पता कर सकते हैं, और हम रेंज भी पता कर सकते हैं, एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम possessed by a projected body at the highest point। मैंने अभी बताया जब आप बॉल थ्रो करते हो तो बॉल कैसे जाती है, घूमती हुई जाती है ना बेटा। कभी आप बोलते हो उसको स्विंग कर गई है, तो आप यहां देखिए ये बॉडी ऐसे गई थीटा एंगल पर, ये इसका आपका वो हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, ये आपकी हाइट है। अच्छा एक चीज और समझिए, जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ता हूं तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब मैं बातें करता हूं इसकी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ओके,
Okay. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by My Dream to bring a revolutionary change in recent education scenario. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by My Dream to bring a revolutionary change in recent education scenario. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by My Dream to bring a revolutionary change in recent education scenario. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by My Dream to bring a revolutionary change in recent education scenario. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by My Dream to bring a revolutionary change in recent education scenario. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept.
Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why my dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by my dream to bring a revolutionary change in recent education scenario. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by My Dream to bring a revolutionary change in recent education scenario. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by My Dream to bring a revolutionary change in recent education scenario. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. How nice it is. Yay. It's a nice step by My Dream to bring a revolutionary change in recent education scenario. Hello, students. Welcome to My Dream, the India's first ever e-learning educational platform where each and every topic is taught with what, why and how concept. Sir, what is this concept? Right question. Then can you tell me what is education? Education means not only to getting marks in examination but also to develop their mind also. That's why My Dream is introducing the concept of what, why and how so that analytical skills of students can be enhanced as well. Wow, sir. Yes. We have taken the break over here. Now we are talking about the radius of curvature. As I told you before, in the circular motion, the radius beta same ही होते हैं, radius of curvature हर point पर same है. But in the projectile motion, the radius of curvature क्या है बेटा? यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है. So there are यहाँ के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसके बराबर तो हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सेम है तो यहाँ सेम हो जाए, यहाँ सेम है तो यहाँ सेम हो जाए. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट एट द डिफरेंट पॉइंट्स एसेंट टू डिसेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिफरेंट. तो उसको डिस्कस करते हैं हम. ठीक है, चलिए बताते हैं आपको. यस,
सो इस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पर ये इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जिसको अभी तक आप हाइट बोल रहे हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो रेडियस है वो उसकी हाइट है। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या था, मूवमेंट ऑफ द मोमेंटम about an axis of rotation, and we want to discuss the angular momentum at the height. तो ये क्या है, हाइट है। हाइट इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मोमेंटम क्या है हाईएस्ट पॉइंट पर, m इंटू यूएस, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो है ही नहीं। There is no velocity either in the vertical, on the vertical component, either in upward or the downward. So h is equals to u square sin square theta and u cos theta. So h is equals to mu cube sin square theta cos theta upon twice of g. If the angular projection is of 45 degree, then you will get mu cube sin square 45 cos 45 upon 2g. So h is equal to mu cube sin 45 upon root 2. There is a square. Then you will get mu cube 4 root 2 g. √2। ऐसा जरूरी नहीं यही आंसर हो, हाईएस्ट पॉइंट पर और भी इन टर्म्स ऑफ हाइट भी आंसर हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेंज भी आंसर हो सकते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगुलर मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ रेंज, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस। What is the angular momentum at this point particular, P, Q, R? ये हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और क्या डिस्कस करेंगे वो भी बताएंगे। Now let us talk about the number of questions. A projectile can have the same range for the two angular projection T1 and T2, or the time of flight in two cases, the product of their time of flight is, yes, one of them is theta because इसने पहले कहा same range, another one is 90 minus theta, both of them are flowing with the certain velocity. So product of their time of birth T1 into T2, that is 2u sin theta by g. Another one sin 90 minus theta, that gives cos. So you can write down 2 upon g, u into u, u square,
2 sin theta cos theta by g, and this is the formula of the ratio. So 2r upon g is the correct answer. B is the correct answer. It can be given in terms of this. The product of their time of flights. Product of their time of flights is directly proportional to r is to power 0, r is to power 1, 1 upon r. So whatever the okay, next question. A particle is projected from the ground with a velocity this. After 2 seconds, it just clear a wall. Yes, you are throwing an object like this with a certain velocity 25 meter per second. After 2 seconds, maybe वो यहाँ पर हो 5 meter wall. Okay. Then the angle of projection. He want to know the angle of projection. 5 meter per second. So h is equals to body का फेंक रहे हैं ऊपर, against the gravity फेंक रहे हैं. हाइट किसकी वजह से होती है बताया आपको. U, that is U sin theta. Height is of 5 meters. The projection velocity is given to you, that is of 25. You want to know the angle of projection. It takes 2 seconds. So 25 2 ja 50 sin 30 theta, sorry, minus 20. So 50 sin theta, 20 plus 5, it will become 25 sin theta, that is 25 by 50. So it will become 1 by 2. And sin theta की वैल्यू 1 by 2 किसकी होती है बेटा 30 degree. So option A is correct. Option A is correct. समझ में आया बेटा बच्चों. हाँ भाई मनीष क्या हाल है. कर लिया था पहले. अच्छा गुड, वेरी गुड. चलिए वेरी गुड. A particle moves in xy plane according to the law of x is equals to this and y is equals to this, where a, b and are the constant, then the particle follows. अच्छा जी क्या करें. So sin ओमेगा t, साइन के फंक्शन ले लेते हैं. क्या आ गया x बाई ए. कॉस का फंक्शन हो गया आपका y ऑब्लिक ए. क्या सोचे पैराबोलिक तो हो नहीं सरा. पैराबोलिक कब होता. पैराबोलिक होता y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ x. सर्कुलर तुम्हें पता ही है स्ट्रेट लाइन होता है y mx प्लस c. चलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. You know
हाँ क्या बोला? हाँ क्या बोला बेटे? हाँ इलिप्स की इक्वेशन है ये। वेरी गुड। y square upon b square. This is the equation of. बच्चे ने मिस्टर बिलाल सही बात बताई आपने। This is the equation of ellipse. So option D is correct. Good, very good. हाँ जी। Okay. The next question is, a cricketer ball is hit at an angle of 60 degree with the horizontal. तो आपको ये तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बताया था द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज k cos square 60 degree and cos 60 that is 1/2, it will become 1/4. और मैंने आपको बोला था 25%, जिसमें बताया था 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40, बताया था 0 डिग्री पर देर इज नो लॉस। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two particles A and B are separated at an angle at a distance x. They projected at the instant towards each other. ये वाला बेटे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसकी स्पीड कितनी है? u/√3। u/√3 दिस इज u√3 and this is u. It makes an angle 30, whereas it makes an angle 60 degree. The time after which the horizontal distance becomes 0. कितने टाइम बाद इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? 0 हो जाए, यानी कि ये मिल जाए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बातें जब ये करता है तो समझ जाओ क्या कह रहा है वो। तो कह रहा है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, u√3 cos 30। और ये क्या बता रहा है? u cos 60। When we are talking about the relative motion में when the two objects are moving towards each other, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, and difference of this will become positive. So आप ऐसे भी कह सकते हो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, ठीक है। If both of them are moving in the same direction, तो डिफरेंस डिस्कस करते हैं। तो यहां क्या करें? u cos 30 minus u cos 60. So it will become u√3 by 2 minus plus u by cos 30 under root 3 by 2. The value of cos 30, that is √3 by 2. Cos 60 1 by 2. So it will become √3 into √3, 3u by 2 plus u by 2. Then you will get 4u by 2. This is the velocity. कौन सी वेलोसिटी है? ये रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है।
और टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंड वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो ट्वाइस ऑफ यू है. So this is the time interval in which the horizontal distance becomes 0. In this duration, ये दोनों यहाँ कहीं, यहाँ कहीं भी मिल जाएंगे. The next question is, what determines the nature of the path followed by the particle? In nature of the path followed क्या पता, स्पीड तो पता नहीं रहा, आप कहाँ स्पीड डिस्कस करते, वेलोसिटी तो सब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है एज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन. एक तो आपको ये बता रहा है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, और एक एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की यहाँ पर मान लीजिए मैं डिस्कस करूँ, यू एक्स हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है ग्रेविटी. एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कल काम आएगा नेक्स्ट सेशन में, जब भी गिरा तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे. यू एक्स इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी. मैक्सिमम नहीं होती है यहाँ पर ग्रेविटी, मिनिमम नहीं होती. इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन को हम डिटरमाइन, व्हाट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द पाथ. ये पाथ जो बता रहा है, क्या बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर रहा है. चलिए जी, ये हो गया. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन. Yesterday I already discussed twice of ux into uy. This is the horizontal velocity, this is the vertical. 2 into 20 into 40, 2 into 10. 2 into 10 into 20, it will become 40 meters. So 40 meter, that option D is correct. The next one is, yes, ये क्या कहता है सुनो. A block is dragged on a smooth plane. It means there is no air resistance or the force of friction. With the help of a rope which is pulled with the velocity this. The horizontal velocity of the block. ठीक है. Yes, इसकी ब्लॉक की the let the velocity of the block. क्लियर था, लिख दो अच्छा था. Let the velocity of the block be, यू मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी, इसकी जाएगी. तो जब इसकी बात कर रहे हैं ब्लॉक की, ये सर्टेन एंगल है हमारा कितना, थीटा. ब्लॉक यू वेलोसिटी पे चल रहा है, तो ये क्या दे रहा है, यू कॉस थीटा. और ये क्या दे रहा है, और ये किससे चल रहा है, जितनी से ये चलेगा उतने से तो ये चलेगा. इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. आप इसको खींच रहे हैं तो उतनी स्पीड से चलेगा, ये उतनी वेलोसिटी से चलेगा. अदरवाइज तो जर्क हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा. सो यू साइन थीटा
is equals to v. So u is equal to v oblique sin theta. This is the velocity of the block. ठीक है, v oblique sin, v option is there. ठीक है, next. This is the question of the, कौन सा क्वेश्चन है ये, चलिए कर देते हैं, वैसे तो रिलेटिव वेलोसिटी का, लेकिन बता, ये कोई रिवर है. A boat is moving like this in still water. A boat which has a speed of 5 kilometers per hour. Crosses a river of width कितनी दी है, along the shortest possible path. ठीक है, so speed is equals to कितना है, 1 किलोमीटर. This is given in minutes, 1/4 of an hour, 1/4 of an hour, that is 15 minutes. So the speed is of 4 kilometers. That is this. Yeah. ये यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 4, which gives 25 minus this is of 3. आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25 minus 16 which is equals to, ठीक है, हाँ ठीक है. The river water in this, the river water in this, yes. Next, ये अगला रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं. चलिए कोई बात नहीं. For an object thrown at an angle 45, the maximum, ये तो आपको पहले ही पता है, h/r is equal to tan theta by 4. If it is a 45, then if theta is equal to 45, then range will become 4 times. Option C is correct. Next. At the top of the trajectory, at the top of the trajectory of a projectile, the acceleration, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, acceleration कितना होता है, जीरो. जीरो तो है नहीं ऑप्शन इसमें, मैक्सिमम नहीं. At the highest point, the velocity is perpendicular. ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है, वर्टिकल कंपोनेंट पर ही तो वेलोसिटी नहीं है. नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. जैसे ही वर्ड आता है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ये सभी को पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है. एक्स एक्सिस पर कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है. A body starts from rest from the origin with an acceleration of 6 meters per second on the x-axis. x-axis पर कितने एक्सिस, पहले इसको देख लेते, चलो इधर देख लेते, ठीक है. x एक्सिस, u तो 0 है, A1 लिखिए आपको इसको,
टाइम तो दिया आपको. A that is of 6, time duration is of 4, 48, yes, 48, x-axis square, 48 meter. On the y-axis, the accelerations are different. The acceleration is of 8 meter per second. Duration same, 64. And you want to know this. So sx square plus xy square gives the distance. 48 plus 64 by 56 तो होने जरा 64 नहीं हो सकता. कैलकुलेशन करोगे जो आएगा लिख लेना. ठीक है बेटा, ये तो कंफर्म है. 56 एंड 64 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसका तो आएगा नहीं. 100 से ऊपर है नहीं, तो 80 होगा इसका. फिर भी आप कैलकुलेट कर लीजिए. नेक्स्ट, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. नहीं किया डिस्कस? किया. चलिए कर दो. A stone projected with the velocity theta, this when it is projected with the velocity 90 minus theta horizontal, it reaches as a height h2. जब उसने 90 माइनस थीटा पर फेंका तब उसकी हाइट कितनी थी? उसकी हाइट थी h2. जब उसने फेंका थीटा पर तब उसकी हाइट थी h1. सो h1 डायरेक्टली लिख देते हैं. h1 डायरेक्ट h1 into h2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. पहले मैंने आई थिंक ये डिस्कस किया आपसे. h2 दैट इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है? कॉस देता. 2 2 जा 4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा by g, there is a square. ये ऐसे नहीं लग रहा रेंज का फार्मूला, पर देर इज सम मिसिंग. क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है. यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा. इट मीन्स आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो. स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है बेटा? 4. Square of 2 4, 4 से multiply 4 से दो. And this is the formula of the range. So h1 into h2 16 कर दीजिए. Range का square, it will become 4 under root. Option first is there. Next. कितने हैं अभी? कितना हो गया? 22.
अभी बताया था ये बॉल इज थ्रोन अप एट एन एंगल विद दिस हॉरिजॉन्टल। कोई बॉडी आप फेंक रहे हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, you want to know the total change in momentum by that instant to return the ground, initial to the final position। initial to the final position में अभी हमने डिस्कस किया था the change in momentum from initial to the final position, that is equal to the weight and the total time of flight, total time of flight, total time of flight, sorry. I have already discussed the change in momentum from initial to the highest point, from initial to the final position on the horizontal component, and the change in momentum from initial to the final position. So that was the total time of flight. आप चेक कर लीजिए, we have already discussed it. ये भी करा दिया आपको, ठीक है, डिस्कस किया था। नेक्स्ट, the coordinates of a moving particle at any time t is given by x is equals to, x is equals to alpha t cube. We want to discuss the speed, dx by dt, 3 alpha t square, that is ux. Similarly, you can find out uy, that is dy by dt, 3 beta t square. This is uy, this is ux, this is u. So u is equals to square of ux plus square of uy, ux that is of 3 जो है क्या कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर है क्या, थ्री अल्फा टी स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर, 3 टी स्क्वायर कॉमन, अल्फा प्लस बीटा। देयर सम मिसिंग, कुछ मिसिंग हो रहा है बेटा, चेक कर लेना। चेक करा देते हैं। थ्री अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा। नो बेटा, ये छोड़ो, दिस इज आंसर। कहाँ गया, ठीक है। The coordinates of a moving particle, yes, x दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करना यहाँ पर, ठीक कर लेना बेटा ये। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज ड्रॉप, ए पार्टिकल है उसे हमने ड्रॉप कर दिया फ्रॉम द सर्टेन हाइट। ए पार्टिकल ए इज ड्रॉप
from a height and another one particle is thrown horizontally. एक ऐसे फेंक रहे हैं, एक ऐसे फेंक रहे हैं. In this case, ये B है. For A, V square is equal to U square plus 2GH. In case of free fall, that will become this. समझ में आया? तो V कितना हो गया बेटा? V हो गया अंडर रूट 2GH. A के लिए ये for B. In the projectile motion as it thrown horizontally, तो uy तो 0 होता, तो vy square is equal to uy square plus 2gh. When an object is thrown horizontally, I have already told so many times to you, तो बेटे क्या करेंगे, ये वेलोसिटी क्या है? 0. And V is equals to, and the magnitude of V के लिए, V के वेलोसिटी के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? V1, और वो इसके बराबर है. Both particles will reach the ground simultaneously. Both particles will reach the ground with the same speed. Both particles reach the ground simultaneously. एक साथ पहुंचेंगे. ठीक है? नेक्स्ट, समझ गए? ऐसा नहीं है A पहले पहुंच जाएगा, B बाद में, B पहले पहुंच जाएगा. नो नो नो, they are attaining the same velocity. That's why they are reaching the same velocity. चलिए ये भी कर दिया. चलिए कर दिया. A body is fired vertically upward. A body is fired vertically upward. Vertically upward, you can take minus. At the highest point, the velocity will become 0. So U now the velocity of the body is this. Okay. अब की बार उसने कहा है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है एट हाफ द मैक्सिमम हाइट हमने ले ली है, और जब उसकी हाइट हाफ कंसीडर करी है तो उसकी स्पीड कितनी दी है? 10. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. दिस इज ऑफ 100, hardly 2 minutes. Then you will get minus 2gh plus gh. So gh of minus, this is of 100, so h will become 100 by g. Then you will get 10 meter. ठीक है? Yes.
A cricketer hits a ball with the velocity this. A cricketer hits a ball with the velocity this at an angle of 60 degree. ठीक है? How far above the ground passes over a fielder? कितनी ऊंचाई ले रहा है वो? अब फील्डर जो है 50 मीटर दूर है. ठीक है? A cricketer hits a ball with a velocity 25 meter per second at an angle of 60 degree. This is of 60. How far above the ground it passes over a fielder which is 50 meters far. So y is equals to x tan theta half gx square u square cos square. This is of 50 is given to you. This is of tan 60 half g की value 10, x is of 50 and u is of 25 into 25 and this is of cos 60 square. 550 by root 3, 50 into root 3, sorry. 50 into root 3. This is of 2, sorry. Minus 10 into 2 into 2 divided by 2 cos 60 half 50 root 3. This is of 5 into 16. ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए जो कर लिया. सही है, कर देते हैं. The value of root 3 is 1.732. योग है जी 173.2 divided by 2. This is 80. हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया. 2 8 जा 16 कैरी 2 6 जा 12. हाँ यही होगा 8 पॉइंट के आसपास. ठीक है, 8.2 is the correct answer. Yes. बिफोर कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस. हाँ जी. In the next session we will discuss the angular momentum at the different positions and the radius of curvature भी हम डिस्कस करेंगे. The radius of curvature at the different positions. एरिया कवर्ड बाय द प्रोजेक्टेड बॉडी भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर रहे हैं. सरकमफ्रांस possessed by the projected bullets. ये कुछ चीजें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके.